what made Dharmendra a star with so many hits over 6 decades. Joining me now is Anil Sharma, film director, producer, very close to the Deol family. Is the only one who actually first directed Dharmendra, Bobby and Sunny in a film called Apne in 2007. Also joining me, Taran Adarsh, film critic, Komal Nata, film trade analyst. Appreciate all of you joining us. I want to come to you, Anil Saab, first, because you knew the Deol family and Dharmendra better than most. Gadar also, of course, featuring Sunny Deol. Dharmendra ji ki special quality kya thi? What was special about him that made so many people like you only want to work with him? धर्म जी जैसा कोई है ही नहीं, सच्ची बात तो ये है। ना धर्मेंद्र जैसा कोई हुआ है ना होगा। वो एक जमीन और मिट्टी के व्यक्ति थे। सानेवाल से आए थे, छोटे से गांव से आए। वो गांव उनके दिल से आज तक नहीं निकला। वो एक आम इंसान। वो इतने बड़े स्टार हो गए। धर्मेंद्र ये कभी महसूस ही नहीं करते थे कि वो स्टार है। हम लोग कहते थे, हम लोग जब हम धर्म जी से पहली बार मिले, हमें याद है बर्निंग ट्रेन के टाइम पे जब मैं असिस्टेंट था और मैं भागते उनके पास गया और मैंने उनको बोला सर 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 ये कॉल शीट। तो उन्होंने उनका वैन का दरवाजा खोला, बोले एक ही है, बोले कॉल शीट, बोले एक ही ऑन दी है। हंसने लगे। मैंने कहा सर वो नई कॉल शीट निकली थी। मैंने कहा सर कल का प्रोग्राम है। बोले ये तो मुझे रवि ने बता दिया। तो फिर मेरी तरफ ऐसे देखने लगे। तो बोले असिस्टेंट हूँ मैं, 16-17 साल का था, 17 साल का रहूंगा। बोले जी अच्छा, ऑल द बेस्ट, मेहनत करना, भगवान तुम्हें कामयाब करेगा। और ऐसा मेरे सर पे हाथ रखा और मुस्कुराते रहे। तो मैंने सोचा धर्मेंद्र इतना बड़ा आदमी और एक नए लड़के से ऐसे बात कर रहा है। मेरे लिए तो ऐसा था जैसे खुदा सामने आ गया, ईश्वर सामने आ गया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी बोल रहा हूं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो धर्म जी जैसा ना कभी हुआ है ना कोई होगा। So जो आप कह रहे हैं कि his humility अनिल शर्मा made him special, कि जितने भी बड़े स्टार थे, his feet were on the ground, जमीन पर था। Yeah, and the sensibility of his cinema. उन्होंने गुरदत्त से लेके, राज कपूर से लेके, राज खोसला से लेके, मनमोहन देसाई से लेके, मेरे साथ भी और भी कितने कितने बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार, हर तरह के जोनर के डायरेक्टरों के साथ काम किया उन्होंने। और हर तरह की फिल्म की, चुपके चुपके भी की। तो उन्होंने मेरा गांव मेरा देश भी किया। तो शोले भी किया रमेश सिप्पी साहब के साथ। तो अनपढ़ भी की उन्होंने, तो सत्यकाम भी की उन्होंने। तो उनका जो जोनर था, तो दोस्त भी की उन्होंने। तो उनका जो जोनर था, हुकूमत भी की उन्होंने मेरे साथ। तो जो उनका जो जोनर था वो इतना डिफरेंट था। और एक एक साल में उनकी 6-6, 7-7 फिल्में हिट आती थी। मिस्टर राजदीप, इफ इन टुडेज टाइम इफ एनी हीरो गेट्स 2 or 3 हिट फिल्म इन अ ईयर, he will take a sword in his hand and cut all India. समझे ना, इतना वो पागल हो जाएगा। मगर धर्मेंद्र 7-7 फिल्में हिट होने के बाद भी वो विनम्र रहते थे। वो ऐसे ही रहते थे। उनको यही लगता था कि मुझे अगले साल फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे कौन जानता है या कौन पहचानता है। या उनको कभी अवार्ड नहीं मिलता तो उनकी स्पीच सुनो। जब उनको पहली बार अवार्ड दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म फेयर ने, तो उन्होंने कहा था मैं रोज एक सूट से लाता था कि शायद इस बार मुझे अवार्ड मिलेगा, लेकिन कभी मुझे मिला ही नहीं। और उनके एक्सप्रेशन देखो, तो उनके अंदर वो जो विनम्रता थी। लेकिन उन्होंने कहा कि लोगों ने, मीडिया ने मुझे अवार्ड दिया हो ना दिया हो, लेकिन लोगों ने अपने दिल में मुझे अवार्ड दे के रखा है। और मेरी कोई पोजीशन मीडिया ने बनाई हो ना बनाई हो, लेकिन मेरी ऑडियंस ने मेरी पोजीशन अपने दिल के दरवाजे पर नंबर 1 बना के रखी हुई है। Very nice words there, Anil Sharma. I want to bring in Komal Nata. Komal Nata, what do you believe was the durability of Dharmendra? 1960 first film and was still doing Rocky or Rani Ki Prem Kahani in 2023. What was the secret sauce? I think, one, he was a much loved actor. Second, he was a brilliant actor. And third, his ability to gel with any and every co-star, with every producer, every director. He was always a people's man, and uppermost in his mind used to be the welfare of people working with him and working in the films that he was doing. I think that stood him in good stead, besides the fact that, of course, he was a brilliant actor. You know, they called him the He-Man of Bollywood, the rough and tough hero, but behind the rough and tough exterior, there was a heart that was so soft,
He was so endearing and he used to love people. So I think all these qualities gave him such a long innings in the industry. Right. Let me go to Taran. Let me go to Taran Adarsh also. Taran, Yeah. you know, such a bankable star. Had years like 73 with 10 hits. Unbelievable. What was Yes. so special about Dharmendra, you think? Well, so many factors actually. The press has labeled him as a he-man and an angry, a person who specialized in action roles. But for me, I think when I look at his body of work, I think he was a complete all-rounder. One of the finest actors that we've had. And look at his body of work, right from his very first film to the kind of film that he's done over the decades, from Rishikesh Mukherjee to Pramod Chakravarti to Ramanand Sagar to Ramesh Sippy, Anil Sharma, so many filmmakers that he's worked with, and you see the versatility of Dharamji in those films. And I think here's a complete all-rounder who never really got that due from the media, but the masses loved him. The So audiences loved him. He was he the was a darling of the mass, masses. he was a genuine mass star in that sense. If you have mass Absolutely, leaders he in was a pipe. politics, he I was a would say he mass was a actor. pipe piper. He was a pipe piper. Picture लगती थी and houseful bored हो जाते थे immediately. And imagine delivering 7 and 8 hits in a year. It's unbelievable, and in today's time, it's just unimaginable also. But Dharamji delivered those numbers, that gave those hits, and I think that's Right. where he scored brownie points. Komal Nata, your final word. Taran is describing him as the actor of the masses. Your description of the Dharmendra, one line that to you defines the man. The man with the golden heart, because there were many from Punjab who came as strugglers to the industry till they did not get a foothold in the industry, till they did not have enough money. They used to live in his house, so he used to provide them food, shelter. After becoming the Dharmendra, who does that? Right. So his house was like an open ashram for people for strugglers from Punjab. I think many people from Punjab owe their careers in Bollywood Right. to Dharmendra. Man with a golden heart, mass actor, and someone who was completely humble. That's what made Dharmendra so special. Thank you all very much for joining me on the show. This is a Dharmendra special.